हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के वीडियो से कनेक्टेड है। जो कल के वीडियो में हमने स्टडी किया था, स्टडी ऑफ मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड कनेक्टर्स, उसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझे। तो उसके बाद हम लोग मदरबोर्ड में नॉर्मली आमतौर पर पाए जाने वाले कुछ इंटीग्रेटेड कनेक्टर्स कंपोनेंट्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझे थे। जो भी था 10-11 पॉइंट जो था उसके बारे में आज वो एक पॉइंट के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट था USB। अगर उस वीडियो में कोई भी आपको डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देयर आर यूज्ड टू कनेक्ट USB device like keyboard, mouse, printers, and external hard drives. To the computer. चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। तो USB जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इनका यूज़ हम लोग USB उपकरणों में करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, और भी जो बाहरी ड्राइव होते हैं, स्पीकर का जो कोड हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो सब ये कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, ईथरनेट पोर्ट। ये सब के बारे में हमने एक लाइव वीडियो भी बनाया है CPU में, जिसमें हम लाइव सब कंपोनेंट दिखाए हैं। तो कुछ दिन में वो वीडियो भी आप लोग का हम अपलोड करेंगे, जो उसमें आप लोग ये देख सकते हैं। हम उसमें समझाए भी हैं कि कीबोर्ड USB कहाँ पे कैसे कनेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं। तो ज़रूर वीडियो आप लोग देखिए, कुछ दिन में वो अपलोड हो जाएगा। ईथरनेट पोर्ट होगा, सॉरी, दिस इज यूज्ड to connect the computer to a wired network. इसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर के वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं। मतलब
कि हम लोग जो वाईफाई का कनेक्टर करते हैं कनेक्ट CPU से, उसमें वहाँ ईथर पोर्ट होता है, उसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये सब हम लोग वीडियो हम बना चुके हैं जो कि CPU में आपको दिखाएं कहाँ कनेक्ट होता है। ये वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा और उसे सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि हम वो आगे बनाते रहें। अब हम तीसरा पॉइंट समझेंगे, ऑडियो पोर्ट्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देयर आर यूज्ड टू कनेक्ट द computer to speakers headphones और microphones। चलिए इसका हिंदी जानते हैं। इसका यूज़ हम लोग स्पीकर, हेडफोन या माइक्रोफोन से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ऑडियो पोर्ट्स। उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो पोर्ट्स। ये हमारा चौथा पॉइंट है, वीडियो पोर्ट्स। These are used to connect the computer to a monitor or a display device common video ports include VGA, DVI, HD, MI and display port। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। वीडियो पोर्ट्स का यूज़ हम लोग कंप्यूटर को मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस जोड़ने के लिए किया जाता है, और ये सामान्यतः वीडियो पोर्ट में VGA, DVI और HDMI और डिस्प्ले पोर्ट इसमें शामिल होते हैं। ये सब इससे कनेक्ट होता है। तो चलिए हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा PS/2 पोर्ट।
These are used to connect a keyboard or a mouse to the computer. तो चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। इनका यूज हम लोग कीबोर्ड या माउस कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। चलिए 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है हमारा सीरियल एंड parallel ports. These are used to connect older device like printers, scanners and external modems. चलिए हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। सीरियल एंड प्रेफर्ड पोर्ट्स का यूज हम लोग प्रिंटर, स्कैनर या बाहरी कोई भी कंपोनेंट मॉडर्न जैसे पुराने उपकरणों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर, ये सब जो भी और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के, वो जो हम बाहर से प्लग करते हैं वो सब हम इसके जरिए ही हम लोग ऐड करते हैं सीरियल एंड प्रेफर्ड। तो इसका यूज हम लोग प्रिंटर और स्कैनर और भी जो रहता है उसको ऐड करने के लिए करते हैं। चलिए 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट है हमारा SATA सीरियल ATA पोर्ट्स। SATA पोर्ट्स हम कह सकते हैं there are used to connect SATA hard drives or optical
drives to the computer. तो चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। इसका यूज हम लोग SATA हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव को जोड़ने के लिए करते हैं। ये 8 पॉइंट देखते हैं। 1 पॉइंट है हमारा M.2 स्लॉट्स। These are used to store M.2 solid state drives SSDs solid state drives which are much faster than traditional hard drives. तो चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। M.2 स्लॉट जो है इसका यूज हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से हार्ड ड्राइव की तुलना में ये बहुत फास्टर होता है। 9 पॉइंट देखते हैं। 9 पॉइंट हमारा PCIe। चलिए पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। प्रिपेयर component interconnect express। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका हम फुल फॉर्म बता दिए, प्रिपेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। देयर आर यूज्ड to connect expansion card like graphics card, sound cards, और networks card to the
कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी समझते हैं। PCIe प्रीफेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, इसका यूज हम लोग इसका करते हैं क्योंकि ये विस्तार कार्ड जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड या अन्य नेटवर्क कार्ड को ये कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। मतलब इसका सबसे बड़ा यूज ये हो गया गाइस कि ये ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड ये सब जो होता है ये डायरेक्ट टू कंप्यूटर से हम कनेक्ट करता है। चलिए 10 और लास्ट है ये हमारा 10 पॉइंट है थंडरबोल्ट पोर्ट्स। चलिए हम इसका मतलब समझते हैं। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट हाई स्पीड drives like external hard drives, video cameras and displays to the computer चलिए हम इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। इनका उपयोग हम लोग हाई स्पीड डिवाइस को जैसे बाहरी हार्ड ड्राइव, वीडियो कैमरा या डिस्प्ले को कंप्यूटर से कनेक्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब बाहर से जो भी हो गया कैमरा लगाते हैं या हाई स्पीड डिवाइस, मतलब कुछ भी जो हाई स्पीड काम करता है, वेब कैमरा हो गया, ऑडियो का माइक हो गया, ये सब जो हम बाहरी कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो इसका हम लोग थंडरबोल्ट पोर्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे। तो यह आपको मदरबोर्ड के इंटीग्रेटर, कनेक्टर्स, कंपोनेंट्स के जो पॉइंट्स हमने 10 समझा, इसमें कोई भी आपको डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप हम लोग पर्सनली हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है लर्निंग अकेडमी 2.0, तो वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।